Hello students, next topic is private saving. The saving of the private sector known as private saving. It equals private disposable income minus consumption. So it's really very simple. जब हम बात कर रहे हैं private saving की तो private saving क्या है? It is basically the saving of the private sector. Okay, and it equals private disposable income minus consumption. Its formula can be written as this denotes the private saving. It is private disposable income minus consumption. Private disposable income. So we have already seen this formula in our previous video, right? Let's recall it. This Y, it denotes GDP. It is basically the income earned by the private sector at home in the domestic country. Okay. It is the income earned by the private sector from abroad. This is net factor payments from abroad. This is the transfer payments received by the government to the private sector. Okay. And this is the interest on the government's debt. So if the government has taken any borrowings from the private sector, the interest payments made by the government to the private sector. Fine. Minus taxes. Taxes are paid by the private sector to the government sector, and that is the reason we have subtracted it in order to calculate private disposable income. Okay. Minus consumption. Consumption is subtracted from private disposable income to obtain private savings. So as you can see that we have subtracted the consumption from the private disposable income to calculate the private savings, because consumption represents the private sector spending to meet the current needs. ठीक है, अगर हमें सेविंग कैलकुलेट करनी होती है तो हम कैसे करते हैं? इनकम माइनस कंजम्पशन, राइट? अब जो कंजम्पशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द प्राइवेट सेक्टर्स स्पेंडिंग और एक्सपेंस टू मीट द करंट नीड्स, टू मीट द करंट नीड्स. Investment, although part of the private sector spending, is not subtracted from the private disposable income. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, वो भी प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग का पार्ट है, लेकिन हमने उसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया है. इट इज नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम. व्हाई? बिकॉज कैपिटल गुड्स आर परचेज्ड टू इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी rather than to satisfy the current needs. अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो वो परचेज किए जाते हैं फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ना कि करंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. And that is the only reason we have not subtracted investment from the private disposable income. Clear? Last thing, that if you want to calculate the private saving rate, what will be its formula? It's simple. हमें कभी भी सेविंग रेट जब कैलकुलेट करना होता है, आप याद कीजिए, तो हम कैसे करते हैं? सेविंग रेट इक्वल टू सेविंग्स अपॉन इनकम. तो वही है फॉर्मूला. प्राइवेट सेविंग रेट, इट विल बी इक्वल टू प्राइवेट सेविंग्स अपॉन प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम. सिंपल. थैंक यू.